देखिए हमें प्लेट टेक्टोनिक्स जो बहुत इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जेकोसी पार्ट तुम्हें पढ़ आइदर तुम्हें पेट्रोलॉजी पढ़ कि इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ जहाँ पढ़ सब तुम कौन दरकार प्लेट टेक्टोनिक्स दरकार। सो प्लेट टेक्टोनिक्स तुम मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कहते टेक्टोनिक प्लेट। सो टेक्टोनिक प्लेट कौन दिस इज लिथोस्फेरिक प्लेट एंड एवरेज थिकनेस ऑफ 100 किलोमीटर। जोटा आम लिथोस्फियर से आम टेक्टोनिक प्लेट बोली कहते। सो एटा ब्रिटल इन नेचर वो थाए कौन ब्रिटल जोटा ब्रेक करे इजिली तुम कौन ब्रेक कर पार से ता सहित इट फ्लोट्स ओवर द आस्थेरोस्फीयर। जोटा तुम लिथोस्फीयर जोटा आम टेक्टोनिक प्लेट बोली कहते जोटा अप टू 100 किलोमीटर डेप्थ कि 150 पाखापाखि आस और 100 ରୁ 660 भीतर आसो आस्थेनोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर फ्लोट्स ऑन आस्थेनोस्फीयर बट जो टेक्टोनिक प्लेट अच्छी से कौन करे मूव कर। सो टेक्टोनिक प्लेट जो मूव करती दे विल कोलाइड विथ ईच अदर और जेहेतु अर्थ रा गोटे कौन अच्छी स्पीयर अच्छी अर्थ गोटे कौन स्पीयर जदि एठू दीटा जिनस एमती डाइवर्स करेंगे निजठू दूरे जी गोटे जगह आसिक से कौन निजे निज सहित बाड़े तमर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अनुसार कि फास्ट आम गोटे कॉन्टिनेंट थिला गोटे सुपर कॉन्टिनेंट थिला कहते पांजिया तापर से भांगिला भांगिकी डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट तैयारी समय जिते भी टेक्टोनिक प्लेट्स अच्छी देयर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी तो कहते मेजर प्लेट आउ माइनर प्लेट। तो कौन कहे मेजर प्लेट आउ माइनर प्लेट। सो मोर टेक्टोनिक प्लेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। टेक्टोनिक प्लेट्स are of two types. One more major plates and a minor plates. So there are 7 major plates for Indo-Australian plate, for African plate, North American plate, South American plate, Eurasian plate, Antarctica plate and Pacific. These are different types of plate. So it for India it completely है Indo-Australian plate बा खाली Indian plate को आजे। तो Indian plate जोटा अच्छी completely ये जो part टा total Indian plate ना that is major plate। तापरे एटा होची Pacific plate देखा पैसिफिक प्लेट पैसिफिक ओशन सुनते पैसिफिक प्लेट। देन आसो तुम एटा को कम्प्लीटली अमेरिकन प्लेट कहीपर यू तुम यहाँ हूँ आटलांटिक ओशन मझे ये जो पार्टा पूरा कम्प्लीटली नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन कहुए ना खाली अमेरिकन प्लेट कहीपर। यदि अमेरिकन प्लेट कह 6 प्लेट हम यदि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कह 7 प्लेट्स। दिस इज आवर आफ्रिकन प्लेट एटा कौन आफ्रिकन प्लेट यहाँ हूँ यूरेशियन प्लेट। तो ये आमर मेजर प्लेट एगुरा सब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट अर्थात स्पीयर ना यूरेशियन एटी अधा अच्छे बुले दिए। तापर यहाँ पैसिफिक प्लेट यहाँ नॉर्थ अमेरिका यहाँ साउथ अमेरिका यहाँ आफ्रिकन प्लेट दीज आर मेजर प्लेट्स से सब कम मेजर प्लेट। तापर ये देख नाजका प्लेट कोकस प्लेट है ये जुअंदा फुका प्लेट अच्छी ये कार्बन प्लेट अच्छी है ना ये
अरेबियन अच्छी सो डिफरेंट टाइप रो छोट छोट जो प्लेट रहिले जो गोटे मेजर प्लेट रो पार्ट ताको हम कहबा माइनर प्लेट सो तुम माइनर प्लेट लिख पार एग्जांपल रे नाजका प्लेट एटा पैसिफिक प्लेट रो अछि कोकस प्लेट से पैसिफिक प्लेट रो अछि कार्बन प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट रो अछि हला जोटा कि तुमर अटलांटिक ओशन रो अछि तो एतरो जत्ते भी देखुछ प्लेट गोटे प्रॉपर कॉन्टिनेंटल प्लेट जोटा हम टेक्टोनिक प्लेट कहते से टेक्टोनिक प्लेट सब बेले किछि पार्ट तुमर लैंड थाए किछि पार्ट थाए ओशन किछि पार्ट थाए कौन लैंड किछि पार्ट ओशन थाए तो आम दीटा टर्म यूज करते गोटे कॉन्टिनेंटल प्लेट यूज करते गोटे ओशनिक प्लेट यूज करते गोटे कॉन्टिनेंटल प्लेट यूज करते गोटे ओशनिक प्लेट यूज करते जोटा कॉन्टिनेंटल प्लेट थाए इट कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट सॉरी जोटा ओशनिक प्लेट थाए दैट कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ ओशनिक पार्ट बा ओशनिक क्रस्ट एटा पैसिफिक प्लेट ए जो जति के हमर ब्लू कलर देखछो सारा सब ओशन पार्ट तो पैसिफिक प्लेट टा कंप्लीटली ओशन हो यदि हम इंडियन प्लेट देखिबा देखो इंडियन प्लेट एटा हला हमर कॉन्टिनेंट पार्ट तापर एटा हबो इंडियन ओशन राइट तो गोटे कॉन्टिनेंटल प्लेट रे मोर पार्ट थाए कॉन्टिनेंट पार्ट थाए ओशन पार्ट थाए कॉन्टिनेंट पार्ट थाए ओशन सो दिस इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट सो ओशनिक प्लेट रे मन रखिबो ओनली ओशन थाए सो देयर इज ओनली वन ओशनिक प्लेट सो राइट डाउन दैट ओनली द पैसिफिक प्लेट इज ओशनिक प्लेट ओनली का पैसिफिक प्लेट इज ओशनिक प्लेट ऑल अदर प्लेट आर कॉन्टिनेंटल प्लेट ओनली तुम्हारा पैसिफिक प्लेट टा हबो ओशनिक प्लेट ऑल अदर इज कॉन्टिनेंटल प्लेट सो जेते भी हमर प्लेट रहिले सो प्लेट दे विल मीट विथ ईच अदर प्लेट रा कोन निजे निजे तो मीट करछन तो सेठी मीट कला बेले त माने अवे मूव करछन कि टुवर्ड्स मूव करछन एटा तुम्हारा एरो रे दिया तुमको धीरे धीरे पढिले एगरो सब मन रखियो कि का सहित कन्वर्स करछि कि का सहित डाइवर्स करछि ए सब जिंस तुमको धीरे धीरे मन रहे सो द प्लेट जो भी मीट करे तो से अनुसार तुम दुईटा कंडीशन आसो गोटे हूँ प्लेट मार्जिन एंड प्लेट बाउंड्री दुईटा इंपोर्टेंट जिन आसो कौन प्लेट मार्जिन कौन प्लेट बाउंड्री कौन सो मार्जिन माने कौन सी थिंग रो मार्जिनल पार्ट कौन सी जिनसर मार्जिनल पार्ट जदि आमे कहबा कि यही जिनसर जदि मार्जिन आमे कहबा ताले एगुरा सब तार मार्जिन हो सेमती कौन सी प्लेट रो मार्जिनल पार्ट इज योर मार्जिन मार्जिनल पार्ट इज मार्जिन so write down first plate margin it is simple the marginal part of a plate it is the marginal part of a plate then plate margin is of two types Guruji active margin Guruji पैसिव मार्जिन गोटे एक्टिव मार्जिन गोटे पैसिव मार्जिन तो आम जाना फास्ट ता पूर्व आमको जाना पड़ो व्हाट इज प्लेट बाउंड्री तो फास्ट यहाँ मेंशन करवा से बुझा प्लेट बाउंड्री बाउंड्री जिते आम कहती जो आम कौन सी जगार तुम कह कि आम घर बाउंड्री लगी बाउंड्री मीनिंग कौन कि दीटा जगह मझीरे जो जिन थी दीटा प्लेस मीटिंग पॉइंट को आम कौन कहते बाउंड्री कहते धर कि तुम जगह आउ कहा जगह जो जगह मीट कर तुम कौन कह बाउंड्री कर बाउंड्री से दि जाए जो कि दीटा प्लेस मीट करेंगे कहते बाउंड्री धर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जोटा से बाउंड्री तो बाउंड्री हूँ प्लेट बाउंड्री हूँ वेयर two tectonic plate
मीट्स जो दीटा टेक्टोनिक प्लेट मीट करते कहते प्लेट बाउंड्री जो दीटा टेक्टोनिक प्लेट मीट करेंगे कहते प्लेट बाउंड्री। तो सपोज आम देखा यहाँ साउथ अमेरिकन प्लेट यहाँ आफ्रिकान प्लेट ये जगह मीट कर तो इट इज प्लेट बाउंड्री। देन साउथ अमेरिकन प्लेट रो साइड टाक मार्जिन कह साइड टाक भी तुम्हें मार्जिन कह प्लेट मार्जिन तार खाली मार्जिनाल पार्ट किंतु गोटे सिंगल प्लेट रो केबे बाउंड्री हेनी बाउंड्री पे तुमको सब यू रिक्वायर टू प्लेट्स तुमको जिते दीटा प्लेट दरकार फॉर बाउंड्री मार्जिन पे यू कैन कंसीडर वन प्लेट सो ए सिंगल प्लेट हैज मार्जिन। सो बुझ पाल बाउंड्री और मार्जिन देन देन द प्लेट मार्जिन इट हैज टू टाइप्स गोटे एक्टिव मार्जिन और पैसिव एंड पैसिव मार्जिन दीटा टाइप में डिफाइन करिया। सो व्हाट इज एक्टिव मार्जिन व्हाट इज पैसिव मार्जिन। सो देखो आम यदि कॉन्टिनेंटल प्लेट देखुं सो कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉन्टिनेंट अनुसार मार्जिन करा जाए जो पैसिव मार्जिन एक्टिव मार्जिन करा जाए सेटा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंट करा जाए। यदि आम साउथ अमेरिकन प्लेट देखुं यहाँ कौन साउथ अमेरिकन प्लेट तो ये पोर्शनटा हूँ कॉन्टिनेंट ये पार्टा कौन कॉन्टिनेंटल पार्ट ठीक अच्छे यहाँ कौन कॉन्टिनेंटल पार्ट ये पार्टा ओशेनिक पार्ट। तो ये जो कॉन्टिनेंटल पार्ट अच्छी ये कॉन्टिनेंटल पार्ट रो पाखरे गोटे बाउंड्री अच्छी पैसिफिक ओशन सहित पैसिफिक प्लेट सहित ये बाउंड्री अच्छी आ गोटे दूर रे बाउंड्री अच्छी देख पार्छ ना नहीं। सपोज यदि आफ्रिकान प्लेट देखा ये जगह तार पाखरे बाउंड्री अच्छी ये जगह एपट साइड तार दूर रे बाउंड्री अच्छी प्लेट रो सबू साइड को तुम्हें मार्जिन कह पार प्लेट रो सबू साइड को आम मार्जिन कह पार। तो मार्जिन जो अच्छी गोटे साइड रे कौन अच्छी पाखरे अच्छी गोटे साइड रे दूर रे अच्छी। सो यदि कॉन्टिनेंटल प्लेट रो पाखरे बाउंड्री थी है कह जाए एक्टिव मार्जिन है इफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट इज नियर द प्लेट बाउंड्री जदि कॉन्टिनेंटल प्लेटा जो साइडटा तार प्लेट बाउंड्री पाखे थी कहवा एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन एक्टिव मार्जिन कह राइट डाउन एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन तुम्हारा द प्लेट बाउंड्री विल बी नियर द कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्री कौन थो कॉन्टिनेंट पाखे थो प्लेट बाउंड्री विल बी नियर द कॉन्टिनेंट। जदि आम देखा पैसिव केस रे एक्टिव एग्जांपल लेके जाओ कि तुम एपटे देखा द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द साउथ अमेरिकन प्लेट द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट नॉर्दर्न मार्जिन ऑफ इंडियन प्लेट नॉर्दर्न मार्जिन भी कौन पाखे अच्छी एपट पूरा सब दूर अच्छा। तो एग्जांपल यू कैन राइट डाउन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिकन प्लेट दैट इज ए एक्टिव मार्जिन। हम इंडिया रे लिख दिए एग्जांपल नॉर्दर्न मार्जिन ऑफ इंडियन नॉर्दर्न आमर हिमालय अच्छी दैट इज एन एक्टिव मार्जिन जोटा कि यूरेशियन प्लेट सहित मीट कर गोटे प्लेट बाउंड्री तो इंडियन प्लेट पाखे अच्छी से एक्टिव मार्जिन। Then comes to passive margin, that is plate boundary will be far from the continent. Write down plate boundary will be far from the continent. So example लिखो से बड़ा तुम्हारा eastern part of the South American plate, eastern side of the South American plate. So it is तुम्हारा passive margin. So it है तुम्हारा types of margin. Then comes to types of plate boundary. Types of plate boundary. So plate boundary can be classified to three types. तीन टाइप में डिवाइड कर परिया तो होची convergent plate boundary, then
divergent plate boundary, then transform plate boundary. Convergent plate boundary, divergent plate boundary, transform plate boundary. So दीटा टाइप रो देखिबा हमर एठी दीटा प्लेट डाइवर्ज करचंती कन्वर्ज करचंती एठी दीटा प्लेट कोन अछि कन्वर्ज करचंती सो जदि कन्वर्जेंस हबो ताले दीटा प्लेट एमती कन्वर्ज करिवे डाला कन्वर्जेंट नो कन्वर्जेंट दीटा प्लेट जो डाइवर्ज करंती दे विल डाइवर्ज लाइक दिस इधर कौन जाए डाइवर्जेंट इधर ट्रांसफॉर्म होगा दे विल स्लाइड पास्ट लाइक ईच अदर लाइक दिस इट इज ट्रांसफॉर्म सो गोटे हूँ तुम यहाँ तुम कन्वर्जेंट दिस इज डाइवर्जेंट दिस इज ट्रांसफॉर्म सो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री टू प्लेट्स विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर कन्वर्जेंट रे कब दुईटा प्लेट टुवर्ड्स ईच अदर मूव करेंगे देन डाइवर्जेंट रे टू प्लेट विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर देन ट्रांसफॉर्म रे दे विल स्लाइड पास्ट विथ ईच अदर से कब स्लाइड पास्ट करेंगे सो फास्ट आम स्टार्ट करवा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री सो राइट डाउन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री सो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इट इज अ प्लेट बाउंड्री वेयर टू प्लेट विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर टू प्लेट्स will move towards each other so it is also called as destructive plate boundary so किसी जिन अच्छी जो जेहेतु डिस्ट्रॉय हुए ताना डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री तो इधर there are different types of convergent plate boundary तो types देखिबा so types on the basis of continental tectonic plate involved है कौन tectonic plate involved अछि ता ऊपर डिपेंड करे ocean continent convergence ocean convergence continent collision ocean continent convergence हबो ocean convergence हबो continent collision so there are three types of plate boundary so आमे गोटे डिस्कस करबा what are the different features what are the different mechanisms that occur within this plate boundary so ocean continent रे by ocean continent और continent sorry ocean continent और ocean भितर जो प्लेट बाउंड्री थाए से माने सेम टाइप ऑफ फीचर प्रोड्यूस करते से हमें गोटे पढ़ा जोटा कि आरटा सेम होता फास्ट हम पढ़ा ओशन कॉन्टिनेंट convergence the ocean continent convergence so during ocean continent convergence one plate will subduct beneath the other plate so during this convergence ocean plate will subduct beneath continental plate तो कन्वर्जेंस पे जेकोसी ओशन कंटेंट कन्वर्जेंस सिनारियो ए आसो बा ओशन कन्वर्जेंस सिनारियो ए आसो केतले दीटा प्लेट कन्वर्ज करंती गोटे प्लेट आ गोटे प्लेट अंडर सबडक्ट हो जाए जिसकी दीटा एमती कन्वर्ज कले गोटे एमती सबडक्ट हो कोन पय हुए कि द ओशन प्लेट इज
मोर डेंसर ओशन प्लेट कौन थाए मोर डेंसर थाए एटा लेस डेंसर थाए सो ड्यूरिंग कन्वर्जेंस जोटा मोर डेंसर थाए इट विल सबडक्ट बीनीथ द लेस डेंसर थिंग मोर डेंसर पार्ट रे मोर ओशन आसुची ओके सो ओशनिक प्लेट हियर oceanic plate it is called as subducted plate तो काम करें subducted plate then continental plate it is called as your overriding plate overriding plate और तुम्हें ताको और तक कही पार अबडक्टेड प्लेट ओवरराइडिंग कहीं या धर चढ़ी जाऊँ से अनुसार कहते ओवरराइडिंग प्लेट यहाँ कहते आम अबडक्टेड प्लेट जो दीटा प्लेट मीट कर जो जगह दीटा प्लेट मीट कर दिस इज कॉल्ड एज योर ट्रेंच आपको कह जाए ट्रेंच सो जो दीटा प्लेट मीट करेंगे दे विल प्रोड्यूस ए डिप्रेशन देयर दैट इज कॉल्ड योर ट्रेंच तुम देख पार एटा गोटे प्लेट अच्छी एटा गोटे प्लेट अच्छी ये जगह से माने मीट करछंती ये जगह हूँ तुम कौन ट्रेंच रे सो कैन राइट डाउन वेयर टू प्लेट विल सबडक्ट द meeting point of two plate they will produce a depression that is called as your trench जोटी तुम दुईटा प्लेट मीट करती से जगह तुम ट्रेंच प्रोड्यूस कर देन कम्स टू ड्यूरिंग मोर सबडक्शन आम कहले जोटा मोर डेंसर से सबडक्ट कर ओशन कंटेंट भितर सब ओशन हूँ मोर डेंसर सो व्हेन इट विल सबडक्ट ताले हमर कॉन्टिनेंटल प्लेट एगुरा सब केते किलोमीटर पन थाए 100 किलोमीटर पन थाए तापर माने ये जदी आ भीतर को सबडक्ट कला तो इट इज गोइंग टू द मैंटल रीजन से कोड आउट मैंटल पा आस्थेनोस्फीयर रीजन को जाउछ कहना कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट होछ के 100 किलोमीटर पन ये आ तळु बसछ माने ऑब्वियसली से जाउछ कोड आस्थेनोस्फीयर आडू तो आर वेलोसिटी सॉरी यार टेम्परेचर कौन हम ग्रेजुअली इनक्रीज करिवो तनो ये जेते भीतर जीव सेते टेम्परेचर इनक्रीज करबा एंड ए जो ओशनिक पार्ट ता प्लेट ता भीतर हो जाउची ये कोन करियो मेल्ट करियो बेसी टेम्परेचर भीतर गला माने से कोन मेल्ट करियो तमर एटा धर आस्थेनोस्फीयर हैला मु आको भीतर को नेली जेते भीतर को नेबी सेते टेम्परेचर बढ़िबो तो ये जो पार्ट रा छै कोन मेल्ट हवा स्टार्ट हो तो ये जो पार्ट रा सब मेल्ट हवा so the subducted plate it dives through the asthenosphere right so it will enter to the asthenosphere it will start melting तो ये कौन मेल्ट हो कहना टेम्परेचर बढ़ियो माने से कौन होती मेल्ट हो मेल्ट होला पर it will produce magma कौन प्रोड्यूस करे magma प्रोड्यूस करे तो जेते बेले मन रखथिबो जो जगह रे कोनोसी थिंग मेल्ट हे कि magma प्रोड्यूस करे माने से जहां प्रोड्यूस करिवो जो मागवाटा से सब ऊपर को उठिया चेष्टा करे कहीं न्यूली थिंग जहाँ नुआ फॉर प्रोड्यूस होची से माने हॉटर थांती और लेस डेंसर थांती तुम्हें धर पानी भितर कौन से प्लास्टिक बॉल जो थोब से आपे उठी जीव कहीं प्लास्टिक बॉल डेंसिटी लेस थाए देन द वाटर तेणु से भाषिब तेणु ये एठी जो प्रोड्यूस हम आ चारिपट जहाँ भी जिनस थे आठू अधिक डेंसर थे से ये कौन हम ऊपर को राइज कर से ऊपर को राइज कर कुआड़े जीव एमती जीव ऊपर ठीक अच्छे तो किंतु ये कौन अच्छी कॉन्टिनेंटल प्लेट अच्छी तो कॉन्टिनेंटल प्लेट ताको ऑब्स्ट्रक्ट कर सी देखिए जापर ना तो सब ये जमा हम ये जगह ठीक अच्छे सो ये तुम प्लेट विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड द magma will start to rise upward magma will start to rise upward and it will segregate below the continental plate तले segregate करी but magma it has a temperature around 700-800 degree temperature हम तो टेम्परेचर जेहेतु अधिक था गुरा तो कॉन्टिनेंटल प्लेट से टेम्परेचर न थाए तो ये अधिक डेप्थ आस ना तो यार टेम्परेचर अधिक हम तो यार टेम्परेचर से न थाए
बट ये जदि ये रहा आसिक बा सेग्रीगेट कला बा ये जगह गैदर्ड है सी जहाँ टेम्परेचर आनी सब जाक इड़ को सी स्कैटर कर तो माग्मा रे जहाँ टेम्परेचर अच्छे इट विल डिफ्यूज टू द नियर बाय कॉन्टिनेंटल पार्ट को डिफ्यूज कर तुम्हें देख कि आम जो प्लास्टिक रो कि जो तेल डबा सब थाए ताको आम बेले बेले जो नड़िया तेल डबा तादर मेल्ट कर कि घी डबा ताको मेल्ट कर देखई दिखती निआ दूरे देखले भी से किस समय पर कौन हम घी तो मेल्ट कर सहित डबा भी टे ये हो जाए खराब हो जाए तो ये भी से भाया हम ये जिते हिट दब ये जो पार्टर टेम्परेचर बढ़ तो चांस अच्छे कि ये मेल्ट कर कौन से पार्टा मेल्ट कर कौन से पार्टा मेल्ट करला माने माग्मा ऊपर को जापर कहीं मेल्ट कले जिनसा कौन भांग फ्रैक्चर हम तो ये जगह सी ऊपर को उठ तो ये सी धीरे 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 मेल्ट करके जगह गोटे कौन गोटे फ्रैक्चर बा गोटे पैसेज बनईद बनईदे सरफेस को पलैस ये वोल्कानो वोल्कानो हेल्ले ये प्रोड्यूस हम गोटे माउंटेन ताको हम कहते वोल्कानिक आर्क हाँ वोल्कानिक आर्क सो प्लेट सबडक्ट हम सबडक्ट है माने से डीपर इनटू द मेंटल जीव डीपर इनटू द मेंटल गले डीपर मेंटल अधिक टेम्परेचर थाए अधिक टेम्परेचर ये मेल्ट हवा स्टार्ट हम मेल्ट हेल्ले कौन हम ऊपर को पुणी उठो ऊपर उठले कॉन्टिनेंटल प्लेट तक अटकैब तो ये जगह सी कौन कर जगह से गैदर है तो ये प्रोसेस को आम कहती ये जो प्रोसेस ये गैदर होपर मेल्ट करती मैग्मेटिक अंडर प्लेटिंग मैग्मेटिक अंडर प्लेटिंग अंडर प्लेटिंग माने अंडर द प्लेट सी सेग्रीगेट सेग्रीगेट है तार जहाँ हिट अच्छी मैग्मार सी डिफ्यूज कर कॉन्टिनेंटल प्लेट को कहीं गोटे गरम जिन ठंडा जिन लगले जो ठंडा से गरम हो कंडक्शन प्रोसेस सो सी हिट कंडक्ट कलापर ये जगह टेम्परेचर बढ़ ये धीरे धीरे मेल्ट हो कहीं या कौन ऊपर को जावाक ऑब्स्ट्रक्ट कर जो ये मेल्ट कर ये गोटे पैसेज प्रोड्यूस कर वोल्कानो हम तो कहते वोल्कानिक आर्क वोल्कानिक आर्क ट्रेंच भितर जो जगह यू ये प्लेस को आम कहती फोर आर्क बेसिन एंड तुम्हें एपट साइड को तुम्हें कहीपर कॉन्टिनेंटल पार्ट वोल्कानिक आर्क एपट को बैक आर्क बेसिन सो ट्रेंच फोर आर्क बेसिन यहाँ वोल्कानिक आर्क यहाँ बैक आर्क बेसिन दिस इज सबडक्टेड प्लेट दिस इज अबडक्टेड प्लेट एंड तुम्हारा मेल्टिंग है कि वोल्कानिज्म बुझे देखो यहाँ जो बेसिन कहते फोर आर बेसिन बोली कहते बेसिन माने सब से जगह सेडिमेंट डिपोजिशन हम किसी डिपोजिशन है तो ये ट्रेंच भी डिपोजिशन हम ये किंतु कंटिन्यूअसली कौन मूव करता ये कंटिन्यूअसली सबडक्ट करता ये कंटिन्यूअसली मूव करता तो ये जगह जहाँ सेडिमेंट्स सब थे ये दुटा मूवमेंट भितर से कौन है कंप्रेस कंप्रेस हो प्रोड्यूस करती स्ट्रक्चर कहते आक्रिसियोनारी प्रिज्म तो कौन कहते ये देख कहते आक्रिसियोनारी वेज बा प्रिज्म तुम कहीपर आक्रिसियोनारी प्रिज्म तो यही टाइप गोटे डिपोजिशन करती इन बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जहाँ सेडिमेंट्स थाए धर ट्रेंच सेडिमेंट जो रहा कि फोर आर्क सेडिमेंट्स रहा तो से गुरा सब भितर कंप्रेस होगी प्रोड्यूस करती कौन आक्रिसियोनारी वेज प्रिज्म जहाँ को है तो ये यहाँ गोटे फीचर तुम ऐड कर आक्रिसियोनारी वेज इन बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स सो एंगल ऑफ सबडक्शन जो सबडक्शन होती केते एंगल हम देखो ये जो आम डायग्राम देखा ये स्टीपर एंगल सबडक्ट होती केते एंगल सबडक्ट होची तापर डिपेंड करे कि व्हाट विल बी द स्पेसिंग ऑफ आर्क एंड ट्रेंच तुम कौन वोल्कानिक आर्क ये जगह हूँ ट्रेंच आंख भितर स्पेसिंग केत
जदि स्टीपर सबडक्शन एंगल है, स्टीपर सबडक्शन एंगल है ताले लेस स्पेसिंग बिटवीन आर्क एंड ट्रेंच। जदि जेंटल सबडक्शन एंगल है बा लेस सबडक्शन एंगल ताले एठी तुमरा मोर स्पेसिंग बिटवीन आर्क एंड ट्रेंच। जदि स्टीपर सबडक्शन एंगल है ताले ताकर स्पेसिंग कम हो जिते स्टीपर हम से जल्दी से बेसी डेप्थ को जापर, जिते जल्दी बेसी डेप्थ को जीव से जगह वोल्कानिज्म से करे। जिते लो एंगल हम से अधिक टाइम लगे अधिक डेप्थ को जावाक से ट्रेंच रू बहुत दूर से वोल्कानो करे बुझिपारे। तो ये जहाँ तुम्हें सब पढ़ुच सब जगह सेम विथ ऑल्सो ओशन ओशन कन्वर्जेंस। बट ओशन ओशन कन्वर्जेंस रे दीटा ओशनिक प्लेट थाए क्योंकि कॉन्टिनेंट ओशन में आम जानते ओशनिक प्लेटा हूँ मोर डेंसर दैन कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो सेठी आम जाना जो ओशन प्लेटा सब सबडक्ट हम कारण जी डेंसर से सबडक्ट हुए किंतु दीटा यदि ओशनिक प्लेट आम नवा ताल आम केमी जाना कौटा अधिक डेंसर हम सब मन रखो जो दीटा प्लेट इनवॉल्व थाए कन्वर्जेंस रे ओशन ओशन रे जोटा ओल्डर थाए सेटा अधिक डेंसर हम कहना जो ओल्डर ओशनिक प्लेट था दे आर मोर डेंसर दैन द यंगर ओशनिक प्लेट। ये दीटा ओशन ओशन कन्वर्जेंस रे खाली ये जान कि जिते कन्वर्जेंस हम जोटा ओल्डर थाए सेटा सबडक्ट हम जोटा यंगर थाए सेटा ओवरराइडिंग हम। एंड ये जहाँ प्रोड्यूस होची वोल्केनिक आर्क प्रोड्यूस होची सेठी आइलैंड आर्क कहुए कहीं सी समुद्र भितर हम दीटा ओशन प्लेट हेले कौन हम समुद्र भितर ही वोल्कानो हम सेठी जहाँ प्रोड्यूस हो आइलैंड हिसाब से कंसीडर करा ये खाली डिफरेंस है ना।